Hey, good evening to all. Am I audible? Yes, sir. So let's start with the today's. Yeah, we can start with the session. Yes.
So in previous session, we already started with the MongoDB, in which we have discussed about the different concept regarding to that. Basically, this is all about the theoretical part. So what is MongoDB? Then what is the use of that? What is the purpose of MongoDB, right? Then what are the different features of a MongoDB, and what are the examples in which we basically use the concept of MongoDB, right? Now today we are just starting with the actual concept regarding to that same, that is MongoDB. And how we can use that in the programming, and what is the actual structure of that MongoDB basically. Okay. One topic we already covered in the previous session, and that is nothing but MongoDB is basically always use the concept of that is a document. We can also call that MongoDB as a document oriented database. Okay, that is document oriented database. Document oriented database. So what does it mean? Document oriented database. So basically we say that object oriented, okay, object oriented programming. So what is object oriented programming? So it's the concept in which we can say that everything we can access with the help of object, right? So it's the concept of object oriented. So here we have one concept that is document oriented. So document oriented means what? Everything, whatever I want to use, whatever I want to create, whatever I want to retrieve, whatever I want to enter, okay? This all the different data, basically. I'm talking about the data, okay? I'm talking about data. So these all the concept, that is all the basic data, we can say that basically we retrieve, we perform some operation on that, okay, is in the form of document. So it is in the form of document means what? So let's take one example. So I just want to use the database for the student, right? So when I'm trying to create the database for the student, so that database, so that student, okay, having some information, basic information, we can say that, or some personal information also, or some educational information also, okay. So if I want to store that all the data, the student related data in the form with the help of MongoDB. So MongoDB is basically a document oriented database, okay, and which always follow the concept of, we already discussed about that also, and which always use the concept of JavaScript, right? It always use the concept of JavaScript. So it always accept the data in the form of scripting or JavaScript format, right? And the conversion of that specific data, which we already provide to that particular as a database, okay, to that particular as a student information, we can say that, okay, in the form of with the help of JavaScript, okay, but in the form of JSON file. So what is JSON file? We already discussed about that also. So JSON is nothing but the JavaScript object notation. Okay, whatever the data we have, which is in the form of document, that particular data, okay, in the form of document, first of all converted into object, and that object is appeared on the web page. So okay, so in that way we can get the output. In that way we can get the, or we can retrieve the data also, right? So let's come to that. How we can use, or how we can use that particular, or we can retrieve the data in which particular format, what is the actual or different format to that particular data also, okay. So let's start with that particular example. So now we consider that we have a database, that is student, and I want to store the information regarding to that student. First, that is personal information also, and educational information also, for example, okay. So it always accept the data in the form of document. So we can execute that. So this is an example. If you have one document, okay, this document is already open on your screen, okay. I'll just given the name, that is rough, okay, and I entered some data in that particular document, and I continuously entering some data in that particular document, okay.
So this is nothing but the support document for us. Okay, in every session I open that document. Okay, and whatever when I enter or when I open that particular document, okay, I will get the information that I personally, basically we can say that I get the information basically, okay, what I taught in the previous session, right? So this is one kind of database for me and you also. Okay, by observing that document, you also get in previous session what we talk about that. Okay, or we talk what we can say that taught regarding to which particular topic also, right? So this is nothing but the concept of, we can say that database, right? But more specifically, I just talking about the student. So we can store the data. So let's say for example, student having the first name. Okay, student having the first name is equal to, okay, let's say for example having the name for example Nilesh. The student also contain the last name. Okay, let's say for example the name of that last name of that student is Sharma. Okay, then after that the student having the address also. Let's say for example name, right? Now after that also contain a mobile number, whatever the mobile number he has. Okay, let us try to execute here, for example in the form of that number, right? So this is nothing but the data to that particular student. Okay, if you observe that table which I already discussed about in previous session, this table, this is nothing but the again same data. We can say that the roll number, then first name, last name, address, mobile number, email, then here student ID, percentage and division. Okay, but that particular data which is in the form of table. Okay, which is in the form of table. And when and in that particular case, in our case, okay, this data in the form of document, right? So this is the basic difference in between these two, MongoDB and RDBMS. In RDBMS, each and every data, okay, which is display, which is we can call it as a, which is show, okay, on the screen in the form of table. So it contains a different number of rows, and that rows, okay, contain the different field, that is nothing but the column. But in MongoDB, it is because we already discussed about that. This is nothing but a document-oriented database. So that all the data represent in the form of document like this: first name, last name, address, okay, and so on. So this is for the student one. Let's say for example S1. Okay, so this is nothing but S1 student. Then S2 also contain, for example, another student, that is S2, which contains another data. Okay, which represent the another data. Let's say for example another data. Okay, so this is for S1 and this is for S2. So this is nothing but a document oriented database, okay, which is represent the data in the form of document, right? But now this is the simple example. When I come to the actual syntactical part to that MongoDB, so at that time also we discussed about that also, okay. But I'll let you know about that. If I trying to execute that, what is the concept of that document-oriented database? Okay, so this is nothing but a document-oriented database. Now, one more thing I just want to add during that previous discussion, that is address.
So address also contain a street name. Let's say, for example, flat number or flat name or anything. Okay, which area, landmark, pin code, taluka place, district place, right? This all the content that all the different we can field also we can add in the address, okay, to represent the address, right? But how we can define that in the form of a document? So basically we can define it like this. Just delete that all the data, okay, and inside the square bracket and inside that curly bracket. So let's say, for example, area. Okay, any area name, let's say, for example, Ravinagar. Okay, just come to that particular here, just give the comma. Then after that, let's say, for example, landmark. Okay, inside the double bracket. Let's say, for example, anything near bus stand. Okay, so I just let you know about that, how we can again further divide that specific field, okay, when we are using the concept of document oriented database. Okay, so basically here we are trying to just divide or further dividation of that address, okay, because address is divided into area, landmark, then city name, district name, pin code, state, country, and all that. Okay, so in that way we can represent the concept or the data in the form of document oriented database. Okay, in the form of document oriented database, right? Clear up to that? So what is the difference between the relational database management system and document oriented database? Yes, any problem regarding to that, please let me know about that. Otherwise just move towards the next. So should I move to the next topic? Okay, so let's come to the next topic. MongoDB data types. Okay, so what are the different data types we can use while we are executing or while we are using the concept of MongoDB with any programming language? Okay, but before that, just a second.
Hello, sir. Yeah, just a second. Yeah, all right. So, what is data types? Hello, Radhika. Can you please update me? Am I audible clearly? Because Yeah, you are, sir. You are. basically, because I'm facing some problem regarding to that network, so that's why. No, no, you are audible. It's perfectly well, fine. Yeah. So next is what is data type? Regarding to that, we already discussed about in the previous when we started up regarding to JavaScript also or jQuery also, right? So what is data types? So data types, okay, which is basically used to just represent the variables. Okay. So what is variable? So variable nothing but the, because we already discussed one example regarding to that. Okay. Now you can see here S1. Okay, S1. So S1 is nothing but the, let's say for example student 1, which having the first name, okay, last name, address, and mobile number. So these are the 4 different field. Okay, basically I used in that in our database to represent the personal information of student. That is S1, right? So first name. Okay, we know very well about that also. Your first name is nothing but the, okay, the bunch of a character or the collection of different characters. Okay, we never use the number in first name. So what does it mean? So it means that when we defined, okay, हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये फर्स्ट नेम जैसे हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं, तो ये फर्स्ट नेम का जो हम लोगों का टाइप होता है, टाइप मींस व्हाट, कि ये फर्स्ट नेम के अंदर हम लोगों को स्टोर क्या करना है. Okay, which particular value I just want to store in that particular, you can say that first name. Okay, so basically can we call it as a variable? So yes, we can. Okay, so variable, what is variable? So variable just decide, okay, or just represent that a specific value which is stored in a specific storage in our computer or in our laptop, in our storage, we can say the device. Okay, clear? To do that, to store that particular constant value, so it will always create, or it will we can say that it always open, okay, or create one particular memory, okay, to that particular block. Okay, let's say for example first name, okay, and I want to store that in one value, that is Nilesh. तो जब मुझे इस नीलेश को स्टोर करना है उस न्यूली क्रिएटेड मेमोरी लोकेशन के अंदर, तो उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है आपका वेरिएबल. Okay, or which particular value I want to store in that particular memory, okay, will decide by that database, sorry, data type, right? So first name is your variable which represent the value in the form of string. That mobile number is another field, because we are talking about the database. So in database we don't have any variable, we call it as a field. Okay, or we call it as a attribute also. Okay, because we already discussed that in the previous session. What is attribute? So attribute define the field. So what is field? Field is nothing but the column. What is column? Column represent the which type of data I want to store in that particular column. Okay, and the data which represent the number of rows, right? So these all are interconnected with each other, so try to concentrate on that. Okay, and try to understand that all the phrases, okay, or the concept regarding to that. Clear? So that first name I want to define with some bunch of characters. Okay, so to define that I need one type of that particular first name, last name, address, and mobile number. Okay, is nothing but the data types.
okay, are nothing but the data types. So what does it mean? I want to define the name. Okay, I want to define the roll number. I want to define the mobile number. I want to define the age also. Okay, I want to define the salary, for example. Okay, so these are all the different types of field, we can say that. Okay, and with the help of that, I want to store some data. So which type of data I want to store in our database? Okay, the type of that particular data which represent with the help of data types. Clear? So name we always define with the help of one data type, and this is nothing but the string. Roll number we define with the help of, let's say, integer. Okay. Mobile number we define with the help of integer value or string value or object value, array value also. Clear? Age we represent with the help of, let's say, for example, a double value. Okay, double value, or we can say that integer value. Salary we define with the help of double value. Clear? Integer value also, or we can define it with the help of string also. Clear? So these are all the different types of database basically we use in a MongoDB to represent the which type of value I want to store in the database in the form of document. Okay, in the form of document. So what are the different data types we have in MongoDB? So first of all, we have first data type is nothing but the string. This is our first data type in MongoDB. Okay, try to write that all the things. This is most important in interview also. It's asked, that question is asked frequently. Okay, at the fresher levels. What are the different data types in MongoDB? Then another data type we have, let's say for example, integer. Another data type, let's say for example, we have boolean. Now after that we have double. So this is the fourth data type we have. Clear? Then we have another data type, that is arrays. Now after that we have object also. Okay. Then after that we have null. So this is the data type in MongoDB, null. Okay. Then one more data type we have, that is nothing but the date. Then after that we have another, that is nothing but the let's say for example min and max keys. Okay, min or max keys. So what is the use of that min and max? So I think you read that or you are deal with that min and max key. Okay, first time, because these are the data types specifically in MongoDB. Okay, so what is the use of that min or max key? So basically this data type, okay, is used to just compare the different values. Okay, different values, whether it is the lowest value or greatest value or highest values. Okay, of a JSON. Of a JSON means what? Because in JSON, we know we have different values in the form of objects. Okay, and I just want to compare that. I just want to, we can say that the lowest value and the highest value. I just want to compare that value. Okay, in that JSON file. So basically, for that we always use the concept, or we always use that data type, that is min or max. Okay, so these are the different data types we always use in MongoDB to define the values. Okay, to define the values. Clear up to that? So just create a list for that. Okay, for the reference. I think
should know about that. What is the concept of string, or which type of value we can store with the help of string, integer, boolean, double, array, object, null, date. Okay, date format means what are the different dates formats we have in our system. For example, date. So dd, and YYY. Okay, so this is one of the format specifically we use in our system. Okay, with the help of that we define or we represent or we show the different date. Okay, one more format we have. Let's say for example dd, and YY. Okay, one more format we have. Let's say for example, then after that dd, and then after that Okay, so it just provide the combination, or it just provide the combination of that year, month, and date with each other in the form of your logic, based on your logic. So which type of or which format of date you want to display on your screen. So it just depend on that. Okay, so for that we always use the concept of that data type, that is date. Okay, now let's come to the next. How to download or how to set up the MongoDB. This is the step-wise procedure. Okay, you should follow to install or to download the MongoDB ID, right? So I just discuss the different steps with you. So you are just write down that all the steps, okay, and try to install or download that MongoDB, okay, whenever we get the time, right? So before the next session, so you just try to install in your system and try to ready your system, okay, to perform the operations, right? So we have some steps to download or to install the MongoDB. Just observe it carefully. If it is possible, ये नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है? और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना. मैं साइट के साथ में सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, तो ये सिर्फ फॉलो कीजिए और आपके सिस्टम में उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है? बेसिकली to install MongoDB, okay, so we previously we discussed about that MongoDB is open source software, right? ये open source है. So basically we have one site that is mongodb.org, ठीक है? और इसके डाउनलोड के सेक्शन में आप लोगों को विजिट करना है, ठीक है? तो इस URL को आप लोगों को ओपन करना है. बिफोर दैट वी हैव https and double quote. So this is the URL to download the MongoDB. Okay, so our first step is visit website. Clear? So after coming that, it just represent that. Let's try to execute that. सिर्फ आप लोगों को ये दिखाता हूँ. Okay, so when you visit that particular site, that is mongodb.org, okay, at first time, so it will just redirect to that mongodb.com. So at that time, you just need to create the account. Okay, first of all,
and after creating that, or you can directly come to that also. Say no. First time you should enter that all the details. Okay, first of all, first name, last name, company, and in company is not a mandatory field here. You can see a email and password is compulsory. So just create your account, and after getting the access to that particular website, you will redirect to that download section also, right? So just enter that all the things properly, right? Then get the user ID and password, and then after getting that, we'll just again visit to that site, and with your credentials, just enter that credential, okay, and come to the download section. So after We can coming download that, it for free, sir. yes, We can download it for free, sir. I have posted the website link. Downloads /community. okay. So कम्युनिटी से भी हाँ यस कम्युनिटी से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं नो प्रॉब्लम Yes, sir. okay so just try with that also so without that user ID and password also you can directly download that no problem okay just copy that page, link the amount is already shared with you fine okay after that just थोड़ा सा खांसी की वजह से मुझे ठीक है सॉरी फॉर दैट ओके नाउ ठीक है तो डाउनलोड सेक्शन में आने के बाद में आप लोगों को आपके अकॉर्डिंग मतलब आपके सिस्टम के अकॉर्डिंगली सिर्फ एक वर्जन को प्रॉपर्ली सिलेक्ट करना है ओके इन विच यू हैव टू जस्ट चेक आउट विच पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम ओके विच इज इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम मोस्ट ऑफ यू हैविंग द 64 बिट ओके बिकॉज अभी ट्रेंडिंग वही शुरू है क्योंकि अगर बाय चांस अगर किसी का 32 बीट अगर कोई यूज कर रहा है ठीक है थोड़ा सा ओल्ड वर्जन अगर लैपटॉप है आप लोगों का तो अकॉर्डिंग टू दैट जस्ट सिलेक्ट द वर्जन ऑफ योर डाउनलोड ओके ऑफ मोंगोडीबी राइट नाउ नेक्स्ट स्टेप हम लोग आएंगे यहाँ पे सो बेसिकली आपको डाउनलोड करना मतलब क्या करना है ठीक है तो मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि मोंगोडीबी ये एक डेटाबेस प्रोवाइडर है ठीक है जो ओपन सोर्स डेटाबेस को प्रोवाइड करता है तो ये क्या प्रोवाइड करेगा हम लोगों को सो बेसिकली इट प्रोवाइड द सर्वर ओके तो हम लोग जो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं ये इंस्टॉलेशन क्या रहेगा तो ये बेसिकली इंस्टॉलेशन रहेगा आपके सर्वर का ठीक है तो आप लोग मोंगोडीबी का सर्वर इंस्टॉल करोगे आपके सिस्टम के अंदर ठीक है if you have the 64 bit of window operating system in your system okay तो आपको यहाँ पर 64 बिट का वर्जन सिलेक्ट करना है ठीक है इतना समझ लीजिए अगर 32 बिट का विंडो अगर आप लोग यूज करते हो तो आपको 32 बिट का मोंगोडीबी का वर्जन इंस्टॉल करना है ठीक है सिर्फ इतना आप लोगों को प्रॉपरली याद रखना है क्लियर अप टू दैट आफ्टर डाउनलोडिंग दैट ठीक है आपको एक exe फाइल मिलेगी या mdb फाइल मिलेगी अगर किसी ने rar फाइल को अगर zip फाइल या rar फाइल को अगर डाउनलोड किया है ठीक है तो उसको एक्सट्रैक्ट करो वो एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप लोगों को वहां पे एक उसके उस फोल्डर के अंदर आप लोगों को एक exe फाइल मिलेगी ठीक है तो उसे सिर्फ एज इट इज डाउनलोड करना है आपके सिस्टम के अंदर ठीक है जस्ट फॉलो द स्टेप्स ओके जस्ट फॉलो द स्टेप्स एंड ट्राई टू इंस्टॉल दैट इन योर सिस्टम क्लियर ठीक है सिर्फ स्टेप को फॉलो करो और उसको प्रॉपरली इंस्टॉल करो
सो बेसिकली जहां पर भी आप लोगों के उस पर्टिकुलर फाइल का इंस्टॉलेशन होगा वो आपका सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स, ठीक है, मोंगो डीबी नाम का है वहां पे, just try to write that syntax path for you, okay, तो कहाँ पे स्टोर होता है, तो ये भी एक आपकी इंफॉर्मेशन के लिए याद रखिए। प्रोग्राम फाइल्स, ठीक है, वहां पे एक फोल्डर क्रिएट होता है दैट इज MongoDB, ठीक है, उसके अंदर एक फोल्डर रहेगा बिन, और उस बिन के अंदर आप लोगों का रहेगा mongodb.exe, ठीक है। तो बेसिकली इस पाथ को आप लोगों को फॉलो करना है, ये मैं इसलिए, ठीक है, स्टेप वाइज फॉलो ही आप लोगों को, जितने भी स्टेप्स रहेंगे उसको ही फॉलो करना है एज इट इज, ठीक है। अगर नहीं, अगर समझ में आ रहा कि कहाँ पे स्टोर हुआ है, कहाँ पे डाउनलोड हुआ है, कहाँ से उसको एग्जीक्यूट करना है, और कहाँ पे हम लोगों का जो पर्टिकुलर MongoDB इंस्टॉल्ड हुआ है, तो ये उसका एक लोकेशन रहेगा, ठीक है। क्लियर अप टू दैट, ठीक है। अब MongoDB इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है, सिर्फ सिंपल आप लोगों को अभी इसको स्टेप्स, मतलब इंस्टॉलेशन हो गया है, अब इसको स्टार्ट कैसे करें, क्लियर। तो स्टार्ट करने के लिए भी आप लोगों को सेम कंसेप्ट है, सेम जो एड्रेस है आप लोगों का, ठीक है, ये जो दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर, इसी को फॉलो करो। जस्ट ओपन द CMD, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कीजिए, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के बाद इसी एड्रेस को वहां पे कॉपी कीजिए और उसको एंटर कीजिए, ठीक है। जैसे एंटर करोगे तो आपका MongoDB का जो भी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ है ये आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर अप टू दैट। Sir, are you trying to show other window? Because we are able to see only this file PDF. No, I just represent that, write that all the step in that document. Yeah, okay, sir. Okay, you have to just follow the steps। ये मैं आप लोगों को मतलब मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी वो इंस्टॉल है, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट इंस्टॉलेशन अगर आपको दिखाता तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि इंस्टॉलेशन किस तरह से करना है, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसको ही आप लोग फॉलो कीजिए। अगर नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को रिप्रेजेंट कर दूंगा कि किस तरह से इंस्टॉलेशन हुआ था, ठीक है। Okay, sir. ये इंस्टॉलेशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाउ टू इंस्टॉल दैट MongoDB, हाउ टू सेट अप द सर्वर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिर्फ इतने स्टेप्स को आप लोगों को फॉलो करना है, फॉलो कर, सिंपल है, स्टेप वाइज प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, हर स्टेप को प्रॉपरली पढ़ो, ठीक है, उसको रीड करो प्रॉपरली, और उसको हर स्टेप को आगे बढ़ाओ, ठीक है। आपका फाइनल इंस्टॉलेशन हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली आईडी है, आईडी डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाती है हम लोगों के सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब ये सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होने के बाद डेस्कटॉप देख पा रहे हो ना आप लोग, ठीक है। ये देखिए MongoDB, ठीक है, इस नाम का एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हुआ है, मतलब आइकॉन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, शॉर्टकट किया एक्चुअली, जो MongoDB का GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को रिप्रेजेंट करता है। आई जस्ट क्लिक ऑन दैट। ये आफ्टर इंस्टॉलेशन की प्रोसेस में आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है।
ओके ओपन होता है तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। सो सर्वर when we configure the server, it means that it requires a local host. What is the concept of local host? Have you heard about that local host? So where basically we use that local host. So to execute any particular website, any web page, okay, any server, it required the hosting. What is hosting? So hosting is nothing but to just provide the system configuration to that particular website to execute that on that particular system. What does it mean? It means that जैसे Amazon या Flipkart, ठीक है, जो भी वेबसाइट आप लोग बेसिकली यूज करते हो, so it contains some traffic. Okay, it contains some traffic. It means that a different client, let's say for example, or user, okay, visit that website and try to get the resource from that particular website. So website से resources रिट्रीव करने के लिए क्लाइंट क्या करते हैं, जैसे आप लोग Amazon के ऊपर जाते हो, प्रोडक्ट सर्च करते हो, अब ऐसे तो नहीं होता है कभी भी कि एक यूजर को एक्सेस मिल गया Amazon का, वो जब तक यूज करेगा तब तक दूसरा क्यू में खड़ा है, मतलब उसको एक्सेस ही नहीं मिलेगा। ओके, thousand number of people or client or user can visit on that Amazon website at the same time, okay, and they also get the response at the same time also, okay। तो वो सर्वर ये नहीं कहता कि मेरे मतलब मेरे सर्वर मतलब मेरे वेबसाइट के ऊपर अभी हजारों लोगों ने विजिट किया, तो मैं सभी लोगों को एट ए टाइम सर्विस प्रोवाइड नहीं करूंगा, मैं उसमें से कोई भी 10 लोगों को चूज करूंगा और उनको ही सर्विस प्रोवाइड करूंगा। It doesn't like that, okay? So each and everyone get the resources at the same time, right? अब ये किसके ये क्यों हो रहा है? Why that all the people get the resources at the same time? Because that particular website, okay, which is built up on a specific host, and that host contain the RAM, that host contain the CPU, that host contain the memory also, okay? ये क्या करता है कि whatever any particular user or client, okay, try to get the resource from that particular server. So on that particular server, whatever we have the configuration on that particular, okay, जो सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने जो अभी बताया, मैंने आपको अभी बताया कि रैम होता है, देन मेमोरी होता है, ठीक है, उसमें से कुछ पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस अलोकेट होता है उस पर्टिकुलर रिस्पांस के लिए जो सर्वर उस क्लाइंट को चाहिए एज अ रिस्पांस, ठीक है। जैसे रिस्पांस सेंड किया जाता है वो मेमोरी फ्री हो जाती है रैम की, और फिर से वो वेट करता है कि नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएगी, फिर से उस रिक्वेस्ट के लिए मैं यूटिलाइज जो मेमोरी होता है आप लोगों का वो अलाउ करेगा, ठीक है, प्रोवाइड करूंगा, उनसे भी रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो होस्टिंग क्या करता है? होस्टिंग इज नथिंग बट okay, a system, we can say that a system which provide us some configuration, with the help of that we provide the resources to our clients, right? For that we always use the concept of host, but we don't have host right now, okay। How many of you heard about that different types of hosting we have available on the net? कोई एग्जांपल दे सकते हो होस्टिंग का, कि जो होस्टिंग आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है, ये होस्टिंग है, ये होस्टिंग इस तरह से होता है? Yes, anyone?
बेसिकली होस्टिंग पता है आप लोगों को क्या होता है? व्हाट इज होस्टिंग? एनीवन कुछ तो पता होगा कि होस्टिंग क्या होता है? व्हाई वी रिक्वायर्ड इट बेसिकली, क्यों हम लोगों को ये चाहिए, कहां से हम लोग उसे परचेस कर सकते हैं? एनीथिंग अबाउट दैट? Storing it on a server, sir. यस, Storing it on server and allowing user to access it. कौन प्रोवाइड करता है? अभी मतलब पता है किसी को ऐसे, मतलब किस तरह से हम लोग उसको परचेस कर सकते हैं? व्हाट इज द वे? बेसिकली मैं ये पूछ रहा हूँ व्हाट आर द डिफरेंट वेज, ओके, टू परचेस द होस्टिंग? ओके, जस्ट अ सेकंड, आई जस्ट लेट यू नो अबाउट. So I just enter one of the name which provide the host for hosting to the. So let's say for example Bluehost. So this is one of the hosting provider website, okay, which provide us a different hosting plans, okay, to the according to the website build. किस तरह से आप लोगों को वेबसाइट क्रिएट करना है, बिल्ड करना है, ठीक है, इस तरह से आप लोगों को ये एक अलग अलग टाइप के जो प्लान्स होते हैं वो प्रोवाइड करता है, ठीक है. सो ये देखिए एक शेयर्ड होस्टिंग है, ये ऑनलाइन स्टोर है, डिफरेंट प्लान्स भी हो. लेट्स से फॉर एग्जांपल ये देखिए, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए. ये देखिए लेट्स से सिक्योर फ्री डोमेन, फ्री एसएसएल, फ्री सीडीएन, मनी बैक गारंटी, ओके. And just come to that plan provided by that. Yes, you can see here. Okay, now consider that. Now you are learning about that full stack development, right? So full stack development means what? In future, for example, if you are creating a website, okay, and if you are trying to after creating that, okay, आपने एक वेबसाइट को क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद वहाँ पे क्या मैजिक तो नहीं होता ऑब्वियसली कि वो ऑनलाइन हो जाए, है ना? मतलब जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट है या कोई भी whatever the website we have, okay, first of all it just develop, and after development of that website, okay, and we need to assign that particular website on a host, okay, configure that particular website on the host, and after configuring that on the host, then after that we'll get that website online. ठीक है, तो होस्टिंग करना मतलब आपके वेबसाइट को और आपके वेब कंटेंट को और आपके वेब पेजेस को, ठीक है, इंटरनेट के ऊपर एक्सेस प्रोवाइड करना. इसलिए हम लोगों को होस्टिंग कंपलसरी होता है, ठीक है, होस्टिंग को हम लोगों को परचेस करना होता है, ठीक है. विदाउट होस्टिंग वी कैन डिस्प्ले द वेबसाइट ऑन इंटरनेट. ट्राई करो आप, कितना भी ट्राई. देखिए वेबसाइट को होस्ट करना मतलब क्या होता है कि वेबसाइट को इंटरनेट के ऊपर एक्सेस प्रोवाइड करना, और एक बार अगर आपके वेबसाइट को इंटरनेट के ऊपर एक्सेस मिल गया है, देन आफ्टर दैट डिफरेंट क्लाइंट, okay, can use whatever the URL you have created for that particular website. ठीक है, अब ये जो URL होता है, who decided that? ये जो यहाँ पे लिखा है ना bluehost.com, so whatever that particular company name
लेट्स से फॉर एग्जांपल ब्लू होस्ट, ओके। अब उस ब्लू होस्ट कंपनी का जो भी ओनर रहेगा उसको एक यूआरएल क्रिएट करना है उसके वेबसाइट के लिए, तो उसने क्रिएट किया है bluehost.com, ठीक है। तो ये bluehost.com जो होता है ये आपके पर्टिकुलर वेबसाइट का एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम लोग डोमेन नेम कहते हैं, ओके। डोमेन नेम, सो डोमेन नेम मींस व्हाट, सो डोमेन नेम इज नथिंग। देखिए आप लोगों ने जो डेवलपमेंट किया था एज अ फुल स्टैक डेवलपर, अगर आप लोगों ने कोई वेबसाइट को डेवलप किया है, ठीक है, तो उस डेवलपमेंट को आप लोग एक्सेस करते हो, आप लोग टेस्ट करते हो, आप लोग एग्जीक्यूट करते हो विद द हेल्प ऑफ एनी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस, ओके। देखिए कंसेप्ट क्या है, आपने वेबसाइट क्रिएट किया, थोड़ा सा अलग है, मतलब आपका जो टॉपिक चल रहा है उसका थोड़ा सा अलग है, लेकिन समझिए ये स्टेप्स क्या होती है। किसी भी वेबसाइट को डेवलप करने के बाद, ठीक है, अब डेवलपमेंट है, डेवलपर डेवलप कर रहा है, उसको टेस्ट कर रहा है, टेस्टर है उसको भी टेस्ट करेगा, तो हर टेस्टर को टेस्ट करने से पहले, ठीक है, कंपलसरी ऐसा नहीं होता है कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट को ऑनलाइन ही लेके जाना है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ऑफलाइन ऑल्सो वी कैन एग्जीक्यूट दैट, ठीक है। और ये ऑफलाइन एग्जीक्यूशन जो होता है वही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप लोगों को आपकी वेबसाइट बार बार एग्जीक्यूट करना होता है, टेस्ट करना होता है, डेवलपर भी करता है और टेस्टर भी करता है, समझ में आ रहा है। तो किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट को टेस्ट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए प्रीवियसली हम लोग क्या करते हैं, एक लोकल होस्ट का यूज करते हैं, समझ में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये लोकल होस्ट, तो ये लोकल होस्ट का कंसेप्ट क्या है ये समझ लीजिए। लोकल होस्ट मतलब सेम आप जिस सिस्टम के ऊपर उस वेबसाइट को यूज कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो फॉर टेस्टिंग पर्पस, ठीक है, आपके सिस्टम को ही सर्वर क्रिएट किया जाएगा, जिसे हम लोग लोकल सर्वर कहेंगे, ठीक है। और आप ही के पर्टिकुलर सर्वर के, आप ही के पर्टिकुलर सिस्टम का रैम, एसएसडी या एचडीडी जो भी होगा, ठीक है, और रिसोर्सेज, सिंपली वी कैन से दैट प्रोसेसर है, जो भी है, व्हाटएवर द रिसोर्सेज दैट रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर वेबसाइट, जो आपके सिस्टम से ही यूज किए जाएंगे, समझ में आ रहा है। इसलिए हम लोग उसे कहते हैं लोकल होस्ट, मतलब लोकल होस्ट मतलब जो ऑनलाइन नहीं होता है, ठीक है। तो ये लोकल होस्ट पे मतलब आपके खुद के सिस्टम के ऊपर आप लोग उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ लोकल होस्ट, ठीक है। अब ये एक्चुअल होस्ट क्या होता है, तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दैट वी नीड टू परचेज दैट पर्टिकुलर स्पेस ऑन इंटरनेट, ठीक है। अभी क्लाउड आ गया है, हम लोग क्लाउड यूज कर सकते हैं, एडब्ल्यूएस हम लोग यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है। ये ब्लू होस्ट हम लोग यूज करते हैं, क्लाउड फ्लेयर नाम का भी एक वो भी यूज करते हैं, गोडैडी आपने सुना है, तो गोडैडी भी एक डोमेन और होस्टिंग होस्टेज होस्ट प्रोवाइडर है, ठीक है, होस्टिंग प्रोवाइडर है, समझ में आ रहा है, गोडैडी सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो व्हाट ये सब क्या है, तो ये बेसिकली ये सारी चीजें इंटरनेट के ऊपर आप लोगों को स्पेस प्रोवाइड करती है आपके वेबसाइट को डिप्लॉय करने के लिए, ठीक है। एक बार हम लोगों ने आपके वेबसाइट को, आप लोगों ने अगर फॉर एग्जांपल डिप्लॉय कर दिया होस्टिंग के ऊपर, तो आपका वेबसाइट ऑनलाइन आ जाता है, ठीक है। देन आफ्टर दैट डिफरेंट पीपल ट्राई टू एक्सेस दैट एंड गेट द रिसोर्सेज फ्रॉम दैट स्पेसिफिक वेबसाइट। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है जो हम लोगों को फॉलो करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने मोंगोडीबी का जो सर्वर अभी कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, ऑब्वियसली हम लोगों के पास होस्टिंग तो नहीं है ऑनलाइन, तो हम लोगों ने परचेस नहीं किया है कुछ भी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों के सिस्टम का एक लोकल होस्ट उसमें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और ये 27017, सो दिस इज नथिंग बट द पोर्ट नंबर, okay, this is nothing but the port number which is basically used to, okay, access that particular website or server with the help of our system, with the help of local host system, ठीक है। तो इसलिए पोर्ट नंबर असाइन किया जाता है टू एक्सेस दैट ऑल द सर्वर कॉन्फ़िगरेशन और different property or the different application which is provided by that MongoDB server, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है जो आप लोगों को यूज करना होता है, इसलिए यहाँ पे लोकल होस्ट और ये पोर्ट नंबर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। सो आई जस्ट क्लिक ऑन दैट कनेक्ट। ये पोस्ट डाउनलोडिंग और पोस्ट इंस्टॉलेशन स्टेप्स है, ठीक है, जो आप लोगों को फॉलो करना है।
तो यू कैन सी हियर, ये एडमिन भी यहाँ पे दिया जाएगा, ये कॉन्फिग लोकल, ये स्टूडेंट, ठीक है, ये सारे के सारे डेटाबेस है। ये स्टूडेंट जो है यूजर डिफाइंड है, मैंने क्रिएट किया था। ये एडमिन, कॉन्फिग और लोकल, ये 3 बाय डिफॉल्ट डेटाबेस आपके सिस्टम में जब आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। देन मैं स्टूडेंट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो मैंने स्टूडेंट इन्फो नाम का एक कलेक्शन क्रिएट किया है। देखिए पूरा मोंगोडीबी आप लोग ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर आप लोगों को आरडीबीएमएस का कंसेप्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, बिकॉज मोंगोडीबी इज अ डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस, सो दैट्स व्हाई वी हैव ओनली डॉक्यूमेंट्स हियर, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल ऑलरेडी शो किया था, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो। You can see here, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। इसी टाइप के कुछ डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। पूरे डेटाबेस में टेबल का कहीं पर भी आप लोगों का व्यू नहीं मिलेगा, बिकॉज ये नेवर यूज द कंसेप्ट ऑफ आरडीबीएमएस, राइट। तो ये देखिए, ये फील्ड और ये वैल्यू जो हम लोगों ने वहां पे यूज किए। फील्ड मतलब क्या, वो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। सो दिस इज नथिंग बट द फील्ड, फर्स्ट नेम इज नथिंग बट द फील्ड, लास्ट नेम इज नथिंग बट द फील्ड, एड्रेस इज नथिंग बट द फील्ड, मोबाइल नंबर आल्सो फील्ड। आफ्टर दैट वी हैव वैल्यूज, ओके, वैल्यूज। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये फील्ड और ये वैल्यूज, ठीक है। अभी कोई डेटा अगर आप लोगों को ऐड करना है, एक तो डॉक्यूमेंट, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट से भी ले सकते हो, या कोई फाइल अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी क्रिएटेड है वहां से भी आप लोग उसको इंपोर्ट कर सकते हो। ये सारी चीजें देखेंगे हम लोग एक्चुअली, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर भी आप लोग देखोगे ये स्ट्रक्चर, तो ये देखो डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर है, बिकॉज दिस इज द डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस लैंग्वेज, ठीक है, मोंगोडीबी। दैट्स व्हाई यहाँ पे आरडीबीएमएस को कभी भी फाइंड आउट मत करना, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा ही नहीं। तो हम लोग देखते हैं, जैसे लोगों को एसक्यूएल का नॉलेज है, तो एसक्यूएल में हम लोग बेसिकली टेबल पे ढूंढते हैं, क्योंकि वो बेस्ड होता है टेबल के ऊपर, राइट, कंप्लीटली बेस्ड ऑन टेबल। बट दिस इज नॉट अ टेबल, दिस इज द डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड। सो हियर जस्ट फाइंड आउट द डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, दैट्स इट, ओके। तो ये डॉक्यूमेंट्स समझ में आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ट्राई टू एक्सप्लोर दैट ऑल द थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर एग्जीक्यूशन और आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ योर MongoDB in your system। तो इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, ओके, हाउ टू क्रिएट द डेटाबेस। इसमें भी आप लोगों को एक कंसेप्ट है, ये डेटाबेस जो है उसके ऊपर क्लिक करना है आप लोगों को, डेटाबेस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आएगा क्रिएट डेटाबेस, सो व्हेन आई क्लिक ऑन दैट, यहाँ पे नेम, तो उसके कलेक्शन का नेम, कलेक्शन का नेम मतलब आपका जो भी डेटा रहेगा उसका आप लोगों को वहाँ पे डिफाइन करना होता है, ठीक है। देन माय क्वेरीज, वी डोंट हैव एनीथिंग राइट नाउ, ठीक है, मेरे इसमें भी अभी कुछ भी नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट्स ऑल अबाउट एम्प्टी, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ तक अगर आप लोगों का मतलब स्ट्रक्चर मिल रहा है, ठीक है, तो समझ जा रहा है कि आप लोगों का इंस्टॉलेशन जो है मोंगोडीबी का प्रॉपर्ली हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। Okay. Now after that, let's come to the actual syntactical part of MongoDB. How to create that? How to create the database in MongoDB and all that. ठीक है? तो आप लोगों को सिर्फ syntax का जो है उसको properly देखना है. After installation, try to execute that also. ठीक है? ये जो syntax में आप लोगों को अभी दिखाऊंगा, वो सारे syntax आप लोग लिखिए और उसी को एज अ प्रैक्टिस आपके डेटाबेस के अप्लाई आफ्टर इंस्टॉलेशन, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेरी आता है आप लोगों का, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। सबसे बेसिक कंसेप्ट, हाउ टू क्रिएट द डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस ही क्रिएट नहीं किया तो स्टोर क्या करोगे, समझ में आ रहा है। सो दैट्स व्हाई फर्स्ट स्टेप, हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस। किसी भी
डेटाबेस को पढ़ने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है हाउ टू क्रिएट द डेटाबेस. वंस यू गेट दैट हाउ टू क्रिएट द डेटाबेस, देन आफ्टर दैट अगर वो आरडीबी में से तो उसमें टेबल कैसे क्रिएट करना है वो नेक्स्ट स्टेप रहेगी. और हम लोग अब लोग जो पढ़ रहे हैं मोंगोडीबी ये डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट द डेटाबेस, देन आफ्टर दैट वी क्रिएट द डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स. ओके, नाउ हाउ टू क्रिएट द डेटाबेस. अब इसके लिए सिंटैक्स जो रहेगा आप लोगों का, किस पर्टिकुलर सिंटैक्स को आप लोगों को यूज करना है. सो वी हैव यूज एंड डेटाबेस नेम. ओके, यूज डेटाबेस नेम. So just create the database, whatever the name. Okay, मैंने जो लिखा है database name. So user decide that particular name. Okay, the name of that particular database. आप लोग decide कीजिए, ठीक है. तो उसको इस particular syntax के थ्रू आप लोगों को use करना है. So use database. So this is basically used to create the database in MongoDB, right? Okay. Now next step is अब database create कर दिया. जैसे consider that you already created a 5 different database. Okay. Now I want to check which after out of that 5 different database. Okay. Out of that 5 different database, which particular database I use currently in my library. Okay. So for that also we have one page. We have one command, and with the help of that command we just observe. Okay. That particular which particular database we are currently using in our system. Okay, so for that next जो step आएगा आप लोगों का to check currently selected database. Okay, so what is the command for that? वहां पे आपको यूज करना है db, only db. Okay, db. I just written that symbol. Okay, तो ये symbol आपको syntax में enter नहीं करना है, ठीक है. This is not a syntax. ये इसलिए है क्योंकि अगर आप लोग कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू इसको अगर एक्सेस करते हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड दैट सिंबल. ओके, जैसे होता है ना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद में ये सिंबल आता है, उसके बाद में हम लोगों का जो भी कमांड होता है वो एंटर करना स्टार्ट करते हैं. तो ये एक कमांड है, ठीक है, जो सीएमडी प्रोवाइड करता है, बट एक्चुअल सिंटैक्स इज ओनली दैट आफ्टर दैट सिंबल. ओके, डीबी. सो व्हेन आई एंटर द डीबी, when I write the db, when I enter, so at that time I'll get the currently usable database. Out of that whatever the database you already created, ठीक है, जो आपने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है उसमें से आप लोग अभी क्या यूज कर रहे हो, ठीक है, उसका आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिलेगा कि दिस इज द डेटाबेस आई करंटली यूज्ड, ओके, इन आवर सिस्टम. क्लियर? ठीक है, अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था कि आपने अगर पांच अलग अलग डेटाबेस क्रिएट किए. नाउ कंसीडर दैट you are working on the data you are working on for example on a project. ओके, अब प्रोजेक्ट में आप लोग अकेले तो नहीं होते हो, ऑब्वियसली एक टीम होती है जो टीम कंप्लीट प्रोजेक्ट को एक्सेस करती है, डेवलप करती है, डिजाइन करती है, ठीक है, टेस्ट करती है, ठीक है. इसका मतलब कि आपने डेटाबेस क्रिएट किया और आपने क्रिएट किए हुए डेटाबेस कोई दूसरा आपका कलीग है, ठीक है, डेवलपर है या डेटाबेस डेवलपर है जो यूज करना चाहता है, ठीक है, लेकिन उसको नहीं पता कि हाउ मेनी नंबर ऑफ डेटाबेस वी ऑलरेडी क्रिएटेड, राइट. तो अभी उसको क्या करना है, आई जस्ट वांट टू चेक डेटाबेस.
ओके, डेटाबेस लिस्ट। मैंने एक सिनेरियो आप लोगों को अभी बताया था कि आपने कंसीडर कीजिए कि 5 डेटाबेस आपने ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हैं। अब दूसरा कोई है जिसको उस 5 डेटाबेस के ऊपर काम करना है। आपका काम था डेटाबेस क्रिएट करना, और अब दूसरे आपके कलीग का काम है उस डेटाबेस के अंदर डेटा को ऐड करना। ठीक है, so to do that particular thing, so at that time your colleague first of all should know about that what are the different database which is already created. ओके, तो उसको चेक करने के लिए कमांड होती है दैट इज शो डीबीएस। शो डीबीएस मतलब डेटाबेसेस को शो करना ऑन द स्क्रीन। इट जस्ट रिप्रेजेंट दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ डेटाबेस वी ऑलरेडी क्रिएटेड ओके इन मोंगोडीबी। ठीक है, सिंपल ये जो कंसेप्ट, ये डीबी कमांड जो हम लोगों ने यूज किया है, सो दैट डीबी कमांड इज बेसिकली यूज्ड टू जस्ट सिलेक्ट द डेटाबेस कि मुझे इस डेटाबेस के ऊपर काम करना है। ठीक है, इसलिए मैं उसके क्या करूं, इससे क्या करूं, ठीक है, चेक करूंगा कि वो ऑलरेडी मैंने यूज किया या नहीं किया। ये यूज डेटाबेस मतलब क्या होता है, इट इज जस्ट यूज टू, इट जस्ट इंडिकेट दैट कि ये डेटाबेस मुझे अभी यूज करना है। ठीक है, कौन सा मैंने यूज सिलेक्ट किया है यूज करने के लिए, तो ये डीबी दिखाएगा। और ये शो डीबीएस क्या करेगा, एक लिस्ट, कंप्लीट डेटाबेस की लिस्ट आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा कि these are the databases, okay, these are the databases we already created in our MongoDB. ठीक है, clear up to that? Yes, sir. Okay, you just write down that all the things. ठीक है, syntactical part, because the simplest way to learn any programming or any database language is that their syntax. Okay, if you know a syntax very well, okay, if you deal with the syntax very well, then उसकी क्वेरी लिखना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, और डेटाबेस को पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है। Okay, so just try to write that all the things. Now let's come to the next. Now suppose we already created one database, okay, and now I just want to add some document, because this is the document oriented database, so that's why I just want to add some document in our database. Okay, so my first query is that how to insert a document in database. How to insert a document in database after creating the database. Now consider that कि आपने कोई डेटाबेस को क्रिएट किया है। Okay, you have created some database, let's say for example any name, let's say for example any name. ठीक है, अब मुझे उस डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ डेटाबेस के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट को ऐड करना है। So syntax for that is I want to add the data in database, so that's why DB. Okay, now let's say for example जो डेटाबेस आप लोगों ने क्रिएट किया है उसका नाम, डेटाबेस नेम। क्या करना है, तो मुझे इंसर्ट करना है। ठीक है, मैंने सबसे पहले मुझे डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, दैट्स व्हाई सिलेक्ट हियर डीबी, दैट इज डेटाबेस। अब कौन से डेटाबेस के ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो ये डेटाबेस का नाम, और ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है, तो इंसर्ट करना है। ठीक है, अब इंसर्ट क्या करना है, सो इनसाइड द ब्रैकेट, ओके, यहां पर आप लोगों को एक कर्ली ब्रैकेट देना है। ठीक है, क्या इंसर्ट करना है, तो मुझे लेट्स से नेम एंटर करना है। ठीक है, I just want to enter
एंटर अ नेम, ठीक है, तो ये आ गया नेम एक एज अ फील्ड। अब उस फील्ड की आएगी वैल्यू, तो उस फील्ड की वैल्यू लेट्स से फॉर एग्जांपल okay amount. So this is the syntax to insert a single document, okay, one document, okay, in our database. You get the point? DB is your database. I don't know which database, so first of all we need to pass in which particular database I just want to enter or insert document. So which type of operation you want to perform here? So I want to perform an insertion operation. So that's why I use here one syntax, that is insert. So I want to insert a name. So that's why I use here one field, that is name, and whatever the constant value we have, that is to that particular name, that is amount. Okay. After that, if we execute that, whatever that particular value which is inserted into the database, I just want to observe that. Okay, so how to observe that inserted value? Anyone भी बता सकता है कि यहाँ पे फिर से हम लोग को कौन सा कमांड है जिसको यूज करना पड़ेगा? Yes. db.database name.show. No, simple. Show DBS. That's it. Okay. This is to view all the databases, right? Yeah. Yes. So basically यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा database, specific name of that database. Okay. Show database name. Clear? Yes, sir. Okay. Now let's come to the next fifth syntax. Now after creating the database, अब उसमें सेकंड जो हम लोगों का एक ऑपरेशन आता है, हाउ टू ड्रॉप द डेटाबेस. ओके, हाउ टू ड्रॉप द डेटाबेस. अब डेटाबेस को मुझे अगर ड्रॉप करना है तो हम लोग किस तरह से करेंगे? व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर दैट? So basically the syntax for to drop the database is that let's say for example, देखिए अब इसमें आप लोगों को सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि डेटाबेस जैसे ये हम लोगों ने जो यूज किया है शो डीबीएस. So it is basically just display the complete list of the databases. Okay, उसमें से आप लोगों को कौन सा ड्रॉप करना है? तो सबसे पहले आप लोगों को उसे क्या करना है? सिलेक्ट करना है. So how to select a specific database? So we already gone to that specific query, और तो हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया था यूज डेटाबेस. ओके, यूज डेटाबेस. सही है ना? आपको लिंक समझ में आ रही है कि मुझे मान लीजिए कि मुझे जैसे फॉर एग्जांपल, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे यूज S1 और मैं फिर से यहाँ पे यूज करता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल S2. तो ये दो डेटाबेस है मेरे पास. जस्ट वांट टू यूज दैट. ठीक है, अब इसमें से कंसीडर कीजिए कि मुझे S1 को डिलीट करना है. ठीक है, सो हाउ टू डिलीट दैट S1?
अभी मैं जो यूज कर रहा हूँ डेटाबेस वो कौन सा है, S2 है, राइट? ठीक है, उससे भी पहले अगर मुझे उस कंप्लीट डेटाबेस की लिस्ट फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ डेटाबेस वी हैव, आई जस्ट वांट टू represent or show, I just want to show that on the screen. So show DBS. So this that will be my query for that. Okay, ठीक है। अब पूरा डेटाबेस का लिस्ट आ गया, उसमें आप लोगों को मिलेगा ये दो डेटाबेस अवेलेबल है, S1 एंड S2। आउट ऑफ दैट आई वांट टू डिलीट द S1। ठीक है, अब S1 को डिलीट करना है तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे ड्रॉप क्वेरी का यूज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने देखिए लिस्ट में आप लोगों का S1 S2 S3 बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे S1 को डिलीट करना है तो सबसे पहले मैं ये कमांड यूज करूंगा S1। उससे क्या होगा, S1 डेटाबेस को सिलेक्ट किया जाएगा। ओके, S1 डेटाबेस को सिलेक्ट किया जाएगा। देन आफ्टर सिलेक्टिंग दैट S1 अब मैं ड्रॉप की क्वेरी यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा। सो हाउ टू ड्रॉप द डेटाबेस, so we have one command that is db drop database, like that, database। ठीक है, are you getting the point? Yes, sir. ठीक है, अब कंसिडर करो कि मुझे यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल S3 है, S4 है, S5 है, S6 भी है, ठीक है। अभी मुझे कंसिडर करो कि S6 को डिलीट करना है, तो सबसे पहले मेरा क्वेरी क्या रहेगा, माय क्वेरी इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर डेटाबेस S6, देन आफ्टर दैट आई डिलीट दैट, आई ड्रॉप दैट। सो db डॉट ड्रॉप डेटाबेस, ठीक है। अब जाके वो S6 जो है वो डिलीट, क्योंकि देखिए डिलीट क्या करना है तो पहले उसको सिलेक्ट करो, ठीक है। अब जो सिलेक्ट किया वही डिलीट होगा, समझ में आ रहा है, जो सिलेक्ट किया उसी को डिलीट करना है। सो हाउ टू क्रिएट द डेटाबेस, हाउ टू लिस्ट आउट द डेटाबेस, हाउ टू सिलेक्ट द डेटाबेस, हाउ टू इंसर्ट द वैल्यू इन द डेटाबेस, okay, and how to drop the database. So these are the different, okay, syntax to perform this all the 5 different types of operation in our MongoDB, okay, in our MongoDB. Clear up to that? Yes, sir. Clear. Okay, now let's come to the next point, how to create। देखिए मैंने जो अभी आप लोगों को एक डेमो दिया था MongoDB के सर्वर का, उसमें डेटाबेस क्रिएट करने के बाद में हम लोगों को कलेक्शन को ऐड करना होता है। ओके, सो व्हाट इज कलेक्शन? सो कलेक्शन इज नथिंग बट द डॉक्यूमेंट, different documents, different fields, that fields contain the different values, okay, and that value when we can say that collectively used in our database, so that is nothing but the collection. So what is collection? In simple word we can say that collection, okay, is nothing but the actual values or actual data in your database, in your MongoDB, ठीक है। जैसे RDBMS के कंसेप्ट के अंदर रोज और कॉलम होते हैं, कॉलम फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और रोज इन्फो मतलब इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है, ठीक है। अभी इंफॉर्मेशन मतलब क्या, कि उस कॉलम के रिलेटेड जो भी ऑपरेशन है उसकी वैल्यूज। सो रो ऑलवेज डिफाइन विद द वैल्यूज, कॉलम ऑलवेज डिफाइन विद द फील्ड्स, ठीक है। उसी तरह से MongoDB के अंदर आपका कलेक्शन होता है। कलेक्शन मतलब क्या, तो इन सिंपल वर्ड कलेक्शन इज नथिंग बट द वैल्यूज, ओके, कलेक्शन इज नथिंग बट द वैल्यूज which are represent the information to a specific database। ये S1 के रिलेटेड ये कलेक्शन हो गया,
ये S2 के रिलेटेड ये नीचे वाला कलेक्शन हो गया. Okay, so collection is nothing but the different values which represent the which type of operation, value, data types also to that particular database. Clear? So our next step is how to create the collection in MongoDB. So most important things, okay? अब इससे पहले जो हम लोगों ने ऑपरेशन परफॉर्म किए, दिस ऑल अबाउट द डेटाबेस. This is all the different operation which we already performed related to the database, right? How to create the database, how to use the database, how to insert the value or collection in database, how to drop the database, how to show the database, how to list out the database. So these are all the different concept of a database. Now let's come to the next, that is how to create the collection. Clear? कलेक्शन समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो उसे सिर्फ थोड़ा सा पॉइंट आउट कर लीजिए. राइट नाउ द सिंटैक्स टू रिप्रेजेंट हाउ टू क्रिएट द कलेक्शन इन MongoDB. The syntax for that is okay. The syntax is db dot create collection. These are all the syntactical part. Okay, so my suggestion to all of you, जो मैं लिख रहा हूँ वो as it is copy paste करो. Don't use okay by your own any word, any alphabet as a capital or as a small, because these are nothing but the syntax and you need to use that in your operation as it is. अगर आपने C को अगर कैपिटल कर दिया तो एरर देगा. इस कलेक्शन के C को अगर स्मॉल कर दिया you should get the error. ओके, वो DB के D को कैपिटल कर दिया तो भी आपको एरर ही मिलेगा. So try to understand this is nothing but the syntactical part. Okay, and you need to use that in your system as it is. Okay, okay, then inside that particular bracket, what is the name of that collection? Okay, जो आप लोगों को वहां पे पास करना है. So what is name? Name क्या करता है? So name is nothing but the type, any string type. Okay, which is basically just specify the name of the collection. Okay, you want to create in your database. जैसे first name है, first name. So first name is nothing but that particular collection name. Okay, so why we create that particular collection, that is first name, because I want to store the first name actual value in our database. So that's why I create the collection name. So that name represent the collection. Okay, name. तो मैं यहाँ पे simplification के लिए ये नाम लिखता हूँ, that is collection name. Okay, collection name. So this is nothing but the name which represent the collection. जैसे first name है, last name है ना? Then mobile number, address, city name. तो बेसिकली ये सारे कंसेप्ट है जो हम लोग वहां पे यूज करते हैं. collection name. Then after that we have another, that is option. So options भी कह सकते हो. So what is options? Okay, what is option? So this is nothing but that particular document type. Okay, this is nothing but the document type. So which type of document you want to create? Okay, basically we specify the size of the memory. Okay, उस particular memory को भी size मतलब represent करता है memory की जो
डॉक्यूमेंट टाइप आप लोगों ने भी क्रिएट किया था, ठीक है, उसके मेमोरी को एक साइज, ठीक है, स्पेसिफाई की जाती है जो बेसिकली ऑप्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग आगे, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू क्रिएट अ कलेक्शन, व्हाट इज द डिफरेंट यूज ऑफ दैट collection, what is collection name, what is option and all that. Now let's come to the next. ठीक है, एक कंप्लीट एग्जांपल मैं क्रिएट करता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई क्रिएट वन डेटाबेस, ठीक है, जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी S1 यूज किया था, तो मैं फिर से अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज लेट्स से फॉर एग्जांपल S1. मैंने सबसे पहले डेटाबेस को सिलेक्ट किया, ठीक है. अब उस डेटाबेस के अंदर मुझे एक कलेक्शन क्रिएट करना है. सो हाउ टू क्रिएट द कलेक्शन? सो db dot create collection, okay, create collection inside the bracket whatever the name of your collection, so collection name. So let's say for example I just want to create here collection name, that is, let's say CoachX. Okay, that will be my collection name. Another, we have options. I don't want to define the size. By default I want to use one size here. Whatever the size which is allocated to that particular collection, I just want to use that. So no need to pass that option value here also. ठीक है, आपने अगर वो पास नहीं किया तो भी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. That's why name given to that particular parameter, that is options, क्योंकि वो ऑप्शनल में है. ठीक है. Now after that, now after creating that collection, I want to see that. Okay, I want to see that. So we have one more command, that is syntax, that is show. क्या देखना है मुझे? तो डेटाबेस नहीं देखना है, मुझे देखना है कलेक्शन which are already created. ठीक है. तो जैसे मैं यहाँ पे ये शो कलेक्शंस ये कमांड यूज करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, ठीक है, तो ये जो CoachX हम लोगों ने एज अ यूज किया था ना कलेक्शन नेम, तो वो एज अ रिजल्ट हम लोगों के स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा. क्लियर अप टू दैट? ज्यादा समझ में आ गया आप लोगों को? So, what is the difference between this collection and database? So database is nothing but can say that ये क्वेश्चन जो है मैं आपको थोड़ा सा SQL के रिलेटेड समझाता हूँ, ठीक है, वो समझ में आ जाएगा. Yes. डेटाबेस के अंदर होते हैं टेबल्स, राइट? Yes, sir. एंड टेबल कंटेन द डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स. Yes, sir. ठीक है. तो SQL के रिलेटेड अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका डेटाबेस के अंदर टेबल्स और उसकी वैल्यूज और डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है, ये हो गया आप लोगों के कंप्लीट एक डेटाबेस और डेटाबेस के रिलेटेड वैल्यूज. ओके, जस्ट अ सेकंड. Okay, so database contains the tables and table contain the values. But in MongoDB, we have one database. Database means what? We have number of table. Let's say, for example,
In SQL, we have one database, and in that database, we have number of tables. In MongoDB, we have one database in which we have different number of collections. Okay, which represent the values. Okay. Yes, sir. Understood. Okay. So next concept is, अब देखिए collections बहुत सारे होते हैं. Number of collection we can store, we can create in database, in a single database. जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया ना, कोचेस नाम का एक कलेक्शन क्रिएट किया. I want to create another also, for example. So I just copy that whole thing from here. Okay. And let's say, for example, I want to create Apple as a collection in our database. So this is another collection. Okay, we created in a database. So if I execute that, again show collections. So at that time we'll get the result, that is CoachX as well as Apple also. Right? But specifically, I want to find out a specific collection name. So for that, we have one command, and that command is nothing but the find the command. Okay, find the command. So find command is basically used to find out a specific collection. Used to find out specific collection. Okay, used to find out a specific collection. So for that also we need to use that with the help of some syntax. So what is the syntax for that? So we have db dot collection name, whatever the collection we have, collection name dot find. Okay, and now execute that. We'll get the specific collection which I want to execute. ठीक है, तो यहां से क्या होगा, मतलब इससे क्या होगा, स्पेसिफिक कलेक्शन को हम लोगों ने क्या कर दिया है, फाइंड आउट कर दिया. ओके, now let's come to the next. Clear up to that? Yes, sir. Okay, now let's come to the name. How to drop the collection. Okay, how to drop the collection. कलेक्शन को किस तरह से ड्रॉप किया जाता है. जैसे देखिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं. पहले हम लोगों ने डेटाबेस क्रिएट किया, उसके बाद डेटाबेस को यूज किया, डेटाबेस को यूज करने के बाद में डेटाबेस को ड्रॉप किया. अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटाबेस के अंदर कलेक्शन को क्रिएट किया, नंबर ऑफ कलेक्शन को क्रिएट किया. अब नंबर ऑफ कलेक्शन में से मुझे एक कलेक्शन को डिलीट करना है. तो आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि एक डेटाबेस के अंदर टेबल है, टेबल को हम लोग अभी ड्रॉप करेंगे. ठीक है, लेकिन यहाँ पे टेबल नहीं होता, यहाँ पे कलेक्शन होता है. सो हाउ टू ड्रॉप द कलेक्शन फ्रॉम द डेटाबेस. सो इज द नेक्स्ट स्टेप. ओके, वी नीड टू एग्जीक्यूट दैट विद द हेल्प ऑफ सिंटैक्स. सो सिंपल क्वेरी फॉर दैट आल्सो, दैट इज db डेटाबेस से मुझे कुछ ड्रॉप करना है. सो हियर वी हैव collection name. Okay, it just represent that which collection you want to drop, and this is the command. Okay, so drop command is basically used to drop the collection, okay, from the database. ठीक है, अब हम लोगों ने, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोगों ने यहाँ पे कितने कलेक्शन क्रिएट किए, दो, एक कोचेक्स है और दूसरा एप्पल है. ओके, सो रिलेटेड टू दैट एग्जांपल इज, क्या रहेगा, db डॉट, लेट्स से फॉर एग्जांपल एप्पल डॉट, ये एप्पल क्या हो जाएगा, जो कलेक्शन हम लोगों ने क्रिएट किया था वो ड्रॉप हो गया. Okay, it just dropped the collection.
Clear, everyone? Okay, Yes, sir. so just do one thing. Try to execute or try to install the MongoDB in your system. Try to create the different database and try to create the different collection. Okay, in next session, we will discuss about the how to insert the documents. ओके इन डेटाबेस, क्योंकि मैंने आप लोगों को दो ऑप्शन दिखाए थे, एक डॉक्यूमेंट भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, और कलेक्शन भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कलेक्शन के रिलेटेड हो गया। अब दूसरा रहेगा आप लोगों का हाउ टू ऐड द डॉक्यूमेंट्स, ओके, हाउ टू इंसर्ट द डॉक्यूमेंट इन MongoDB। सो इन नेक्स्ट सेशन वी डिस्कस अबाउट दैट आल्सो। क्लियर? Now, as I told earlier in the previous session, and discuss with you, in next session, we would discuss about the previous whatever we have the session regarding to the JavaScript and jQuery. Okay, regarding to that, we have some basic questions. Okay, so I just want to discuss with you basically, and I already told you about that to prepare that all the topics. Okay, so I think you should एग्जीक्यूट कर लिया, मतलब आपने कर लिया ना, उसको प्रिपेयर किया है थोड़ा। So I just want to discuss that. Okay, so try to just note down that all the topics related to that. Okay, because it's very important regarding to the interview purpose. Okay, as a fresher interview or as a mediate interview, these all the questions are very important regarding to that. So that's why I just put up some question in front of you. Try to solve that or try to answer it. Okay. So first of all, I start with the JavaScript, and at the same time try to write that also. Recording तो है आप लोगों के पास, क्वेश्चन वैसे आप लोगों को मिल जाएंगे. No worry about that. ठीक है, सब basic question. ठीक है. So my first question is, what is JavaScript? First of all, I discuss with the JavaScript. Okay. Then in next session we start with the jQuery. So what is JavaScript? Anyone? I'm expecting that all the answer from your side. It's a programming language of web, sir. Okay. Basically, don't say with that programming language. Just say it is nothing but the scripting language. Scripting language, yes. Okay. Which is the object based scripting language, cross-platform, lightweight. Okay. Yes. Widely used for the client side validation. So these are all the different answers you add in your. Try to add that all the things in your answer. क्योंकि देखिए उल्टे व्यूअर को एक मिनट में समझ में आ जाएगा कि आपने इसे कंप्लीट कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, वो एक्सप्लेन करते हैं। हेलो ओके, तो ये आंसर जो आप लोग दे रहे हो, ये आंसर थोड़े से आप लोगों के इस टाइप से भी लगने चाहिए कि ये आप लोग कहीं से पढ़ के एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो। ऑब्वियसली पढ़ना तो आप लोगों को बुक से ही है, ठीक है, ऑब्वियसली, लेकिन इसको ट्राई टू एक्सप्लेन दैट इन योर ओन वे। सो जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. Okay, it is object-based, lightweight, cross-platform translated language, basically used for the client-side validation. Okay, so such a type of answer, always try to explain that whenever you appear for the any interview. ठीक है, क्योंकि नॉलेज ये बुकिश नहीं होना चाहिए आप लोगों के रिलेटेड, मतलब वो नहीं, मतलब इस टाइप का जो इंप्रेशन होता है ना वो नहीं आता है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। अब फीचर्स मतलब क्या है, व्हाट इज फीचर्स? Features in the sense we can say that the features are nothing but the why we use that language or why we choose that JavaScript for example. Okay,
तो लाइट वेट है, इंटरप्रिटेड है ना, ओपन सोर्स है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, केस सेंसिटिव, केस और क्या कह सकते हो? Yes, always use with the HTML, because HTML take care of to convert that all in from any content to a specific web content. Whatever we have the content in script, जैसे हम लोगों ने स्क्रिप्टिंग में जो भी लिखा है उस कंटेंट को कन्वर्ट करने के लिए कोई कंपाइलर हम लोगों को यूज नहीं करना होता है. Basically we just need a translator. The translator is basically used to just convert whatever the content we are in that program into a specific web, right? So that's why we always use that, and this is nothing but the different features, right? The next question we have regarding to that, define a different name of function in JavaScript, or how to define the function in JavaScript, right? JavaScript में function को किस तरह से define किया जाता है. So we have one keyword that is function. Then after that function name, I just open the body for that. Then after that I call the function. So this is the simplest way to execute or to use or to call the function in JavaScript, right? So this is the concept, basic question, how to create a function in JavaScript. using function, sir. Yes, using function keyword. After that we have function name. Then after that we have circular bracket. Then after that we open the curly bracket and close the curly bracket. In between that curly bracket we need to define our function body. Okay, and after completion of that function, I just call that function outside that function body, right? Because whatever the different logic we have which is written in that particular function, I just want to execute that. So that's why next step is to call the function, right? Yes, sir. Then we have another question, how to write a simple program with the help of JavaScript, explain that. Okay, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कि how to write the script, how we can write the script, how many ways we have to write the script with the help of JavaScript. So there are three different ways we have to, with the help of that we can define the script. Script tag, sir. Using Yeah, script this is tag. the basic, with the help of script tag we need to define the script. But what are the different way to define that script tag? Inside the head, inside the body, and with the help of external JavaScript file. So these are the three different way, and with the help of that we can execute the JavaScript or script in program, right? Yes, sir. How we can define that? Just tell me the syntax for that also. ये भी क्वेश्चन आता है. तो हेड के अंदर किस तरह से यूज किया जाएगा? If we define our script inside in the head, now we can access that. So with the help of control we can access that. If we define it with inside the body, then how we can access that. If we define that externally, then how we can access that external file. Okay, so try to prepare that question for that also. Okay, try to prepare your answer for that question, right? Yes, sir. Because this is the very important basic question regarding to that JavaScript as a fresher level. One more important question, what is the difference between Java and JavaScript? अब इसका आंसर आप लोग किस तरह से दोगे? जावा और जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई रिलेशनशिप है? Nothing. Okay, there is in between Java and JavaScript. Clear? But अभी आप लोगों को आगे वाले ने डिफरेंस पूछ लिया है.
वो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन दिस टू। ठीक है, अब ये दोनों का डिफरेंस आप लोगों को बताना है कि जावा जावा ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फंक्शनैलिटी को एक्सेस और यूज करता है विद सम प्रोसीजर ओरिएंटेड कंसेप्ट आल्सो। ठीक है, अब ये जो भी मतलब अब जो जावा में होता है और जो जावा में नहीं होता है, ठीक है, वो आप लोगों को कंपैरेटिवली एक्सप्लेन करना है। और कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इज द जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज? Yes, sir. Yes, JavaScript is a case sensitive language, right? Uh, yeah, we have seen it in features of JavaScript. देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है या नहीं, उसको आपको चेक करना है। वेर जो हम लोग यूज करते हैं, VAR, लेट हम लोग यूज करते हैं, कॉन्स्ट हम लोग यूज करते हैं, उसका स्पेल हम लोग चेंज कर सकते हो क्या? जैसे आप लोगों ने वेर यूज किया, VAR एक वेरिएबल का टाइप मतलब डिफाइन करने के लिए हम लोग एज अ डेटा टाइप यूज करते हैं। तो उस वेर का V कैपिटल कर दीजिए, A कैपिटल कर दीजिए, R कैपिटल कर दीजिए, डेफिनेटली विल गेट द एरर। क्लियर? क्योंकि वो केस सेंसिटिव कीवर्ड है, एज इट इज यूज करना होता है, सो दैट्स व्हाई इट इज नथिंग बट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। Yes, sir. केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। देन उसके बाद में आता है व्हाट इज बॉम। BOM और DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल एंड ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। मॉड्यूल भी कह सकते हो या मॉडल भी कह सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, व्हाट इज डॉम एंड व्हाट इज बॉम। DOM BOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, इसको प्रॉपरली करके रखना है आप लोगों को। दिस क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग सेम व्हाट इज डॉम एंड व्हाट इज बॉम। Okay, try to prepare that all the questions. Where with you. Next session, first of all, I just want that answers from your side. Then we'll start with the next session, right? And so, in every session, I'll put up some question to you to try to prepare that all the answer for that. ठीक है, तो आप लोगों को आगे जाके फिर और जैसे इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए बहुत काम में आएंगे। ठीक है, Yes, sir. ओके। So, any up to that? Sir, hello. I have question, sir. Yes. Sir, actually, last two session I am not available, sir. And Just try to contact with your batch coordinator, right? oh, I think they okay, sir. No problem, sir. But sir, I have question, sir. Sir, मैं क्वेश्चन सर इसमें मे बी इंटरव्यू में सर पूछ सकते हैं कि जैसे सर मोंगोडीबी हम सर यूज करते हैं, जैसे आप मैं अगर यूज कर रहा हूँ या मैं अगर पढ़ रहा हूँ तो मोंगोडीबी यूज कर रहा हूँ। ये नो एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, सर ये भी क्या ये मोंगोडीबी की तरह यूज करते हैं कि ये तीनों अलग है सर? माई एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल, सो टोटली डिफरेंट सर। देखिए बेसिकली नो एसक्यूएल का जो कंसेप्ट है और ये जो मोंगोडीबी का जो कंसेप्ट है वो सिमिलर है। माई एसक्यूएल में हम लोग बेसिकली क्वेरी का यूज करते हैं, जहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कंसेप्ट आता है, जो टेबल के फॉर्म में रोज और कॉलम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नो एसक्यूएल और ये जो मोंगोडीबी का जो कंसेप्ट है, जो डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस है, जहाँ पे टेबल के फॉर्मेट का कोई मतलब नहीं है, मतलब वो टेबल फॉर्मेट में आप लोगों का डेटा जो है उसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा। So whatever we have the data in our database in the form of document or in the form of collection. ठीक है, तो ये बेसिक सर सॉरी सर। any more query?
हेलो हाँ बोलिए ना। सर, वही मैं मतलब आपने कहा नो एसक्यूएल और मोंगोडीबी का कंसेप्ट सेम है, और सर आपने बोला माई एसक्यूएल जो बताया, और सर ये एसक्यूएल सर्वर का क्या कंसेप्ट भी अलग है सर? एसक्यूएल सर्वर, एक सर्वर भी आता है सर, वो अलग है क्या? In market, we have near about 15 to 20 database providers, right? ओके सर। SQL, MySQL, PLSQL जैसे ओरेकल का एक डेटाबेस है, ठीक है। MySQL एक खुद का एक प्रोडक्ट, माइक्रोसॉफ्ट का जो जिसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। जी सर। फिर उसके बाद में एक कंसेप्ट, हेलो हेलो। उसके बाद एक पोस्टग्रेस एसक्यूएल का एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग है, मतलब डेटाबेस है जो भी प्रोवाइड मतलब किया जाता है। सो वी ओके हैव सर। नंबर ऑफ डेटाबेस प्रोवाइडर्स इन मार्केट, जिसमें से आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली आपको क्या चाहिए वो आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्शन करना होगा। अब जैसे मान लीजिए कि किसी को अगर टेबल के फॉर्मेट में डेटा अगर चाहिए तो बेसिकली वहाँ पे माईएसक्यूएल का यूज किया जाएगा, जो एसक्यूएल पीएलएसक्यूएल का यूज किया जा सकता है, पोस्टग्रेस का एसक्यूएल यूज किया जा सकता है, because these all the database provide the relational database management system concept to the users. Okay, but if you want the data in the form of collection, if you want the data in the form of document, so at that time, and if you don't require the data in the form of table, okay, so instead of using that RDBMS, we should go with the MongoDB, right? ओके सर। सर मोंगोडीबी पे क्या एक अकेला मतलब बंदा काम कर सकता है कि उसमें भी टीम वर्क होता है सर? ऑब्वियसली प्रोजेक्ट के साइज के ऊपर डिपेंड रहेगा। Have the project, okay, which contain the, for example, मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे मान लीजिए कि अब ऑब्वियसली वहां पे तो टीम लगेगी ना। You can use that MongoDB alone also or with the team also, no problem with that. ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। Okay. ओके, थैंक यू सर। Good night to all. Good night, sir. Thank you.